अस्सलामुअलैकुम। सो आई एम रियली एक्साइटेड और मैं ख़ास करके इस अवार्ड के लिए आज बैठी हूँ। हालांकि मुझे बहुत ऑनर किया है मेरे दूसरे प्रेजेंटर्स ने ये अवार्ड देने के लिए, बट ये मेरा फेवरेट अवार्ड है। लास्ट ईयर हम इस तरह की कैटेगरी को नहीं जस्टिस कर पाए क्योंकि डेफिनेटली हर दफ़ा एक कैटेगरी हमें फ़िल्टर करनी पड़ती है, फिर हमारे ज्यूरी के डिसीजंस होते हैं, एडवाइजरी बैठती है। इस दफ़ा वी मेड श्योर कि दिस कैटेगरी शुड नॉट बी मिस्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अदर देन लुइस जे पिंटो गम्बी। इनको किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ही हैज़ बीन द बैकबोन. I, as a CEO of my founder of my own Shan Pakistan, I have no words for these kind of musicians who have taken their ages in the long journey and the processes. And as a best individual musician, I'm so overwhelmed to present this award to Gumby. And this awards has its own efficacy. ये उनके लिए है जो वाकई इस चीज़ के capable हैं, मतलब इसका कोई नेमल बदल नहीं है. So congratulations. Gumby, this is for you. Thank you and so I'm much. So it's much such an happy, honor. and I'm so much honored to present you this award myself. Thank you so much. And I would love to have you again and again for each and every aspect That's of music. amazing. Inshallah. That's a beautiful Thank award you. right there. That's great. you. That's great. Thank you so much. Thank you My so pleasure. much. So And you know, I'd really like to sort of from the bottom of my heart is because I think जो musicians की जो importance होती है जी. वो for some reason is not seen as important as maybe the main artist, right? जी. Or people like yourself and your organization, Shan Pakistan, is making that impact for the musicians also. Right. Thank you. और मैं समझता हूँ कि because मेरी जो एक जर्नी रही है, I started out playing in a hotel lobby. Right. मैं lobby में बजाता था. Wow. And काफ़ी nightmare था वो. It was crazy because लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए आते थे and you know for you to control your volume as a musician, like as a drummer, Wow. वो बड़ा मुश्किल होता था. तो एक बड़ी I wouldn't say, I guess वो struggle is a part of it. जी बिल्कुल. लेकिन That made you what you are. Exactly. And जी. coming from there to where I am right now, and you know, touch wood, it's been about almost 4 years that I've been working with Rahat Fateh Ali. MashaAllah. And it requires a certain skill set. It requires a certain frame of mind to be playing with a musician like him. बेशक. I mean, hands down, he's fantastic. But the first and only time that I experienced a certain level of respect on and off stage Right. from him जी. was incredible. And then, you know, for something like this to be to be getting something like this, so it's really an honor, and I feel great that you know you are adding a category like this in an award ceremony like this for musicians. वाओ. सो आप क्या समझेंगे गंबी कि ये कैटेगरी होनी चाहिए थी ना, इतने अरसे में मिस हुई है, और ये आप जैसे लोग तो बैकबोन्स हैं, वरना तो गाना सिर्फ लिरिक्स तो नहीं है, सिर्फ गाना तो नहीं है, उसके बजाय मतलब आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके बजाय तो गाना भी नहीं बन सकता. Basically, there are two sides of the equation. अगर सिंगर नहीं है तो हमारा कोई मतलब हम इंस्ट्रूमेंटल कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया, इन सारी जगहों में इंस्ट्रूमेंटल सुनने का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. Although I'm a huge fan of instrumental music, right. But when it comes to doing songs, or it comes to playing with a band, or playing with an artist, an individual artist, 50% musicians होता है, 50% artists होता है. Right. So it's a bond. combination. It's yeah? a bond. And और एक वो जिस तरह कहते हैं ना, मियाँ बीवी एक होती है, अगर इनके बीच में थोड़ा सा भी कुछ issue होता है, it never works. Right. So there has to be a certain synergy, and every project, whether it was the Coca-Cola project I did with Ruhail, right. or whether it was the YouPhone project I did with my team, or whether it was with Khan Saab, or whether it was with Mikal Hassan, there was a certain synergy that I feel was very important, and it just brings out this, वो जिस तरह खान साहब कहते हैं आमद होने वाली चीज़ होती है. It's just the right mood. It's the right atmosphere, it's right. the right choice of notes exactly. that the musicians play with you, and you just feel like, you know, you're invincible at that time, basically. Wow. So, मैं एक चीज़ बड़ी इनसे बात थोड़ी देर पहले हो रही थी, and I was just thinking, you said आमद होती है. जी. तो एक म्यूजिशियन जो सिंगर है वो गाता है, जी. और डेफिनेटली यू प्ले योर बेस्ट सिग्नेचर बिल्कुल म्यूजिक इन इट. बिल्कुल. तो वो भी आपको लगता है कि वो आपके लिए भी एक आमद का वो है, बिल्कुल, या बिल्कुल. आप उसको उस सिनर्जी को उनसे ट्रांसफ़र करते हैं
या यू मेक योर ओन मोमेंटम जी। एंड यू ब्रिंग योर ओन सिनर्जीज टू बी मैच्ड. आप थोड़ा मुझे हल्का सा बताएं बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई माई सेल्फ आई एम नॉट अ म्यूजिशियन. मैं हमेशा कहती हूँ मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म जरूर, बट मुझे उसके बारे में सुनने में समझने में बड़ा मजा आता है. And it's very important to know who you are, what's your genre, what have you been, what synergize you, what is your positivity. More important, what's my job? What's your job? मेरा काम क्या है बैंड? Exactly. Basically, apart drums, एक तो होता है drums बजाना, और जिस तरह just to explain what you just asked, कि दो किस्म के लोग होते हैं, दो किस्म के musicians होते हैं. एक होता है जो हर शो पे या हर दिन हर रात जो भी शो बजाता है, एक स्पॉटलेस, एक अमेजिंग सोलो या एक ग्रूव या कोई वोकल चीज़ हर रोज़ एग्जैक्टली वही गाएगा, एग्जैक्टली स्पॉटलेस. Right. And then there's another set of musician who's going to play a new show every time he or she plays. Whether you're playing every day or whether you're playing once a month or you're playing once a year. I fall in the latter. Oh, okay. ठीक है. जो मेरी feeling होती है stage पे is triggered off by the events of the day. कि मेरे साथ क्या हुआ रोड पे, कोई बंदे ने मुझे काट के वो गलत उसने काट दिया, इंटरसेक्शन पे काट दिया, या किसी ने गंदी नज़र कराई है, या somebody said something that upset me, or someone did something that made me feel very emotional. And last but not the least, it's the topic of the song. Wow. जो गाने की जो topic होती है, you got to feel that. Okay. अगर लिरिकल कंटेंट है उसमें, मैं हमेशा, अगर मेरी पंजाबी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मेरी आई प्लेड पश्तो सॉन्ग्स, आई प्लेड सराइकी सॉन्ग्स, सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लेकिन मैं हमेशा एज अ रूल मैं पूछता ये गाना किस चीज़ के बारे में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ उस गाने के बारे में, व्हाटएवर द टॉपिक इज, इट्स एन एक्सप्रेशन. ठीक है, इट्स एन एक्सप्रेशन दैट विल कम आउट इन माई प्लेइंग, एंड आई थिंक that is what translates to your audience. Very nice. अगर कोई love song है तो मैं कोई aggressive चीज़ नहीं बजा सकता उसमें. Okay. Basically. Obviously, because right? वो तो jelly नहीं exactly. होगा ना. अगर कोई बगावत का गाना हो तो फिर उसमें आप तो romance नहीं कर सकते. Exactly. So, you know, so it's yeah, it has to go with the topic. Exactly. So there are two kinds of musicians out there. एक who will be spot on, like will play exactly like crazy slick playing. Right. And then there are musicians वो कहते हैं जी आप कोई चीज़ फेंके और मैं पकड़ लूँगा भाई. और खान साहब के साथ, and the reason why I keep talking about Khan Sahab is because not just he's a great human being and is a really funny guy. Right. हमेशा हंसाते रहते हैं on and off stage, but जब वो अपने element में होते stage पे, वो शायद audience को समझ में आए ना आए, लेकिन हम अपना मज़ा करते हैं. Whether there are 20 people in front or 20,000 people in front, it really doesn't matter. आप enjoy करते हैं. Exactly. और वो यही कहते हैं गंभी भाई, there are times के क्योंकि वो आगे बैठते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में बैठता हूँ, तो it's not that I can see him or he can see me all the time. But you can feel that. You can feel it right there and then. Right there and then. And I think that is the success to me, that I'm able to penetrate through my audience. Yeah. And through the person who is hiring me, or to the band that I belong to, that when I'm playing with them, they feel comfortable. It's not about कि हर तरफ तैयारी दिखानी होती है. Yeah. वो एक कहते हैं ना वजहदारी होता है, तो आपको अचानक ही कुछ होता है कि कुछ म्यूजिशियन होता है कि जी ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस को वो देखता ही नहीं है, क्योंकि वो फील नहीं कर पाता है. वो फील नहीं कर पाता है. ऑडियंस को नहीं पता कि मैं कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ या सिंपल कर रहा हूँ. Whatever translate to them is what they feel. Wow. And if they don't feel something, then you are doing something wrong. Audience का कसूर नहीं है. कसूर नहीं है. Exactly. So you defined it so well. I will have this longer chat with Gumby because Gumby हमें बार-बार नहीं मिलेंगे. इस वजह से because नहीं, क्योंकि इस तरह के लोग, क्योंकि एक तो क्रिएटिव एंगल बहुत रखते हैं, मैं ये समझती हूँ, और दूसरा ये कि मुझे ये पता है कि you are such a person जो बैक कैमरे में अपनी ही ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के एक अच्छी चीज़ बनाते हैं. जैसे आपने कहा वजहदारी होता है, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि कोई चीज़ म्यूजिशियन को भी आपकी एनर्जी कितनी मिलती होगी और कोई चीज़ वो बना लेता होगा. आप कुछ ऐसा बजा लेते होंगे कि वो कुछ अच्छा गा लेता होगा, क्योंकि ये अल्फाज ऐसे ही निकल जाते हैं ना, वो कंफर्ट लेवल चाहिए होता है. सो आई थिंक म्यूजिक हैज़ दैट केमिस्ट्री टू हैव अलोंग. I was just here to
present the award, but I will definitely make a mark to sit with this gentleman, talk more about music, a little bit more. Why? Because it's important. What we are not just justicing this platform as giving just awards, it's just how these people have escalated the Shan of Pakistan, and they are actually the Shan of Pakistan. We are just an organizers. They are the people who have made musicians, made singers. इनकी वजह से अब राहत फ़तेह अली खान का नाम इन्होंने खुद इतनी दफ़ा लिया कि मुझे यही हो रहा है कि कितनी ज़बरदस्त बात है कि उनको इनके साथ मौका मिला और इनको उनके साथ मौका मिला, बल्कि राज इज़ लकी टू हैव पीपल लाइक हिम एंड दे क्रिएट सच अ miracles and such a masti on the stage. So I think it's fantastic, Gumby, and I think we should keep connecting with you. And as you said before, in Shan-e-Pakistan, we are not just giving awards, we are trying to make this musicians, क्योंकि आप देखते हैं यूजुअली गम्बी क्या होता है कि एक एक्टर अपनी शक्ल से पहचाना जाता है जी, उसको ना भी बोलना है तो वो अपनी शक्ल से एक सेलिब्रिटी बन जाता है जी. तो हमारे म्यूजिशियन भी तो सेलिब्रिटी हैं, आप सेलिब्रिटी हैं जी. आपकी फेस वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि लोगों को लगे ओ ये गम्बी साहब जा रहे हैं, मतलब ये हमारे मुल्क का अलमिया है. अच्छा, फॉर मी मेरी जो एक ट्रांजिशन फेज थी फ्रॉम, वो कहते हैं यू आर अ नोबडी, राइट, यू आर नोबडी, एंड व्हाई वुड एनीवन इवन केयर कि who are you and what you do. It doesn't, and that's the way of the world. Right. That's वो दुनियादारी ऐसी चलती है भाई. तो मेरा जो aim था while I was growing up, I never thought I'd get to a point where I'd be sitting here and accepting an award from you and be on television, right? मतलब मुझे तो दूर तक अंदाज़ा नहीं था. आपको बुला लिया ना ज़बरदस्ती. Exactly. So the thing is that when I was growing up, मेरा जो aim था was to just play music. Yeah. And that's all I ever did in my life. मैं स्कूल में complete नालायक बच्चा था. I was very bad at academics. Right. Very bad at academics. So anything and everything that I learned, whether it was table manners or whether it was how to speak in public or how to interact with people, I learned it on the road. Right. While traveling, I started traveling at a very early age, and I just kept traveling. I think the last 10 years for me has been more out of the country than I've been in the country. And met different kinds of people, met different kind of musicians. I learned so much from just being a musician, not just music. Right. And I was very lucky, touch wood, to find great people who put me on the right path. Right. But you chose your direction as well. Yeah? I chose my direction at a very early age, and I think that would be in my favor to some extent. Right. कि I grasped, मैंने absorb काफ़ी चीज़ें की over the years. मिकाल के साथ जब मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी. आमिर ज़की के साथ बजाया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी. Then I was touring with the Vital Signs back in 1991. We did a couple of shows together. Then legendary journey. Exactly, and then with Ruhail, it was those must be fantastic. 4 years with Coke Studio it just opened up different avenues for me. I went on to putting up a recording facility. Right. So over the years, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई, लेकिन वो पूरी जो जर्नी थी ना, बड़ा इंस्पायर किया मुझे कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें भी करूँ. Right. It wasn't enough for me कि मैं जाके ड्रम्स बजाऊँ स्टेज पे. I wanted to feel connected to everybody in the band, and for my thirst to understand कि microphones किस तरह, what's the whole process of recording, and what kind of preamps are using and stuff like that. I was always very mesmerized by what Ruhail was doing. I was always mesmerized by what Amir Zaki was playing. Yeah. All of these little things. And मेरी actually dream होती थी कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूँ या ऐसे लोगों के साथ बजाऊँ. And for me, it was important to earn that skill in order for me to be playing with those musicians. So आपको ऐसा होता है, Gumby, sorry to interfere you, आप अपनी इतनी खजाना जो है दूसरों को बांटें या सिखाएं, या आप सिखाते हैं बिल्कुल लोगों को, आप ट्रेन करते हैं? बिल्कुल. अमेजिंग. मैं कभी मना नहीं करता अगर कोई मुझसे कोई चीज़ पूछता है. आप Gumby, आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो अगर आपको कोई स्टूडेंट ढूंढे, वो तो बेचारा मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ही कुछ काबिल हो सकेगा, अगर एक साल तक आपको ढूंढता रहेगा. उसका एक रीज़न है कि पिछले 4 साल में मैं तकरीबन पर ईयर 150 से पौने 200 फ्लाइटें ले चुका हूँ. Wow, you've traveled so much. That's the amount I travel. तो जब कोई काम नहीं होता ना, right. तो मैं
कोशिश यही करता हूँ, I spend time with my mother and my dogs. Wow. That's my whole universe right there. Right. कोई किसी ने मुझसे कोई सवाल किया कि आप पिछले 7 महीने में क्या कर रहे थे, आप बोर नहीं हुए और घर से बाहर ही नहीं निकले, तो मैंने बोला यार ये तो I look forward to something like this, and you got maybe a chance to, you know, relax. Unfortunately कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा हुआ है, लेकिन for me I think most of लोगों के लिए अच्छा हुआ, time I have yeah. everything I need in my studio, yeah. and everything I need for my You had that space, my you know? emotional Yeah. well-being, you know, my dogs and my mother, and that's more important for me than anything else. और वही बात है, again कोई आमद होती है चीज़, go down, fire up the studio, उधर ही record कर दिया. Amazing, it's fantastic. So I think we have justice this part where we have tried to give you the award, and I have got chance to sit with you, and everybody is looking, and I think they will. You're an inspiration for a lot of people. Alhamdulillah. So, bas Gumby, last and finally, what you think about SEPMA? What would you say something good about SEPMA? SEPMA is it's not about my platform because it's an organization where we try to justice music. हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ जूरी, इतनी जूरी है और इतने लोग हैं ऐसे जो मेस्ट्रोज हैं जो वाकई इस चीज़ को फिल्टर करके आप जैसे लोगों को अवार्ड देते हैं. लाइक मेरा डिसीजन नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो एंड तक भी नहीं पता था कि कौन है, एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड कि वाओ ही इज़ वेल डिजर्विंग. Thank you so much. We would have some quote from you, and then definitely that's the end phase of SEPMA itself. No, I really appreciate the jury and Shan Pakistan. I think that's such a fantastic name, Shan Pakistan. It feels grand. Yeah. It there's this certain you know, weight to it, and I'm really honored and humbled that you know I've been chosen this award. Wow. Especially over the musicians who were in the category also, and I think Kami, Paul, Umran and me have worked a lot together in the past, a lot, and I don't think me getting this award should be taking away anything from, because I think Kami Paul is a fantastic drummer. That's your kindness. Yeah, he's a fantastic drummer, and I mean the stuff he's playing and the stuff he's did with Coke Studio, it's really fantastic. And last but not the least, Gul Mohammed, he is वो sarangi बजाते हैं ना, मैं कहता रुलाएगा क्या मुझे. You know, he's so much emotion in his playing and stuff like that. Because you yourself is such a beautiful person from heart, and I think everybody must be thinking that it's a joint venture. I think this award has been dedicated to everybody who has been nominated. Exactly, I guess, I think. exactly. So that's the best part we can see. And that's what I like to say. You know, this award is on behalf of all those people out there. I think it's I should be sharing this with everybody else. Wonderful, fantastic.